गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। ठीक है। चलिए तो गाइज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम लोग ने कल स्टॉप किया था। सो आई गेस इन द प्रीवियस वीडियो आई कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। वी आर डूइंग कंपाइलर सीरीज एंड हम लोग सारे ही क्वेश्चंस जो पास्ट एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं उसके हम सोल्यूशंस बना रहे हैं। एंड आई हैव स्टार्टेड विथ AS2, दैट इज इन्वेंट्री। क्या कहते हो गाइज? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 Jan 21 का पेपर। अगर मुझे बरोबर से याद हो तो मैंने कल आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर May 20 RTP। ऐसा ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आया तो आपको मिलेगा आगे आज ही। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एज अ रिचुअल गाइज, मेरे लिए ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि आप मेरे फुल लेक्चर्स देख सकते हो। वी आर अ बंच ऑफ एजुकेटर्स और हम लोग अपने आप को आशीर्वाद के ग्रुप से मानते हैं। सो गाइज, ये जो आशीर्वाद ग्रुप है ये बैचेस निकालते रहते हैं एंड दिस इज एन आशीर्वाद बैच फॉर November 22 स्टूडेंट्स गाइज। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है फॉर CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एंड ये स्टार्ट हो चुका है 8 जून को। आप गाइज प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए इसे लाइव। सो कोई भी नए चैप्टर से आप आराम से जुड़ सकते हो। एंड वन ग्रेट थिंग अबाउट अन अकेडमी इज दैट कि आपने जो मिस भी किया हो ना उसका रिकॉर्डेड आपको बैकअप मिल जाएगा। सो ये बहुत बढ़िया बात है गाइस। गाइस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ ये बैच ले रही है। इनफैक्ट 5 फैकल्टीज़ है। वन, दैट इज़ मी। आई विल बी टेकिंग योर एडवांस अकाउंटिंग। ऑडिट आपके पॉपली सर लेंगे। EIS आपके देवांग सर लेंगे। SM आपके नीता मंगल मैम लेंगे। और आपकी FM ये सचिन गुप्ता सर लेंगे। ये पांचों ही फैकल्टी इतनी एक्सपीरियंस है ना कि ये CA फाइनल के फैकल्टीज़ भी है। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा, मंडे टू सैटरडे क्लासेस होगा, टेस्ट सीरीज होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, एग्जाम के पहले फुल डे मैराथन सीरीज ली जाएगी। जैसे ये अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पूरी कंपाइलर सीरीज सॉल्व करा रहा हूँ, वैसे ही मैं G2 की भी कंपाइलर सीरीज कराऊंगा आपको। यू नो वी विल गिव यू लोड्स एंड लोड्स ऑफ कंटेंट। आप थक जाओगे कि क्या प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज हमारा टारगेट एक ही है कि हमें मिनिमम एग्जाम्शन स्कोर करना है। आपके डाउट्स हैंड्स रेस की तरह यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद एजुकेटर एंड सॉल्व इट। अनलिमिटेड वॉच टाइम्स। अन अकेडमी के रिजल्ट्स बहुत ही फैंटास्टिक है। लाइक दीपा जैन AR7 फॉर CA फाइनल, आई वाज प्रिविलेज टू मीट हर। गाइज देखिए बाकी सारे लोग भी। ये हमारे बैच का टाइम टेबल है। वी स्टार्टेड मॉर्निंग 9:45 to 11:15 मंडे टू सैटरडे। एडवांस अकाउंटिंग अमित पॉपली सर, ऑडिट 11:30 to 1:30। देवांग सर EIS 1:45 to 3:45। मीता मंगल मैम सेम 1:45 to 3:45। सो जब SM चल रहा होगा तो EIS नहीं चल रहा होगा, जब EIS चल रहा होगा तो SM नहीं चल रहा होगा। एंड सचिन सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर 4 to 5:30। गाइस राहुल मलकान सर, पॉपली सर, सचिन गुप्ता सर, देवांग सर, मीता मंगल मैम। तो मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर ही लीजिए इस बैच को अभी। एंड ये बैच जून पे चालू हुआ है, जुलाई पे 40% पोर्शन कवर कर हो जाएगा अपना। अगस्त तक और सितंबर तक 100% पोर्शन कवर करने का प्लानिंग है। अक्टूबर में हार्डकोर रिवीजन करेंगे। नवंबर में आपके एग्जाम के एक दिन पहले भी मैराथन सीरीज चलेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्लान गाइस। सब्सक्रिप्शन के साथ इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। इवैल्यूएटेड होगी, दैट मीन्स आपके पेपर्स चेक होंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। लाइव टू लाइव मेंटोरिंग, आइकॉनिक फीचर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना, दैट इज़ RM10। ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टू मच, कैन आई स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8 Jan 21 का पेपर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज पर AS2। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever is less. Raw material should be valued at cost, but if the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then raw material should be valued at replacement cost. Work in progress and finished goods should be valued at cost or NRV whichever is less. Cost में क्या आता है? Cost में आ जाता है cost of purchase, cost of conversion, other costs. And what is not included in the cost of inventory is, guys, storage cost, abnormal wastages, administration expenses and selling expenses are not included in the cost of inventory. Are we exactly clear with that one? सो क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ यू ऑल आर रेडी, एक बार चकास बोल देना, एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि मुझे ऐसे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं ये लेक्चर्स लेता रहूँ आपके लिए। फर्स्ट वन, Mr. Jatin gives you the following information relating to items forming the part of inventory as on 31st March 2019.
His enterprise produces product P using raw material X. As simple as that. So guys, finished product P है, raw material X है. 900 units of raw material X was purchased at 100 per unit. Replacement cost of raw material X as on 31st of March 2019 is 80. So raw material X का cost 100 दिया हुआ है, replacement cost 80 दिया हुआ है. 400 units of partly finished goods are in process of producing P. Cost incurred till date is 245. This units can be finished next year by incurring additional cost of 50 per unit. Work in progress की बात हो रही है. Work in progress का cost 245 है. Additional cost of completing is 50 per unit. ठीक है. Next one. 800 units of finished product P and the total cost incurred is 295. So finished product का 295 उन्होंने cost बोला है. Expected selling price of the product is 280 subject to a payment of 5% brokerage on the selling price. So guys, NRV उसका 280 बोला है, but we have a brokerage of 5% also. So NRV 280 minus 5% हो जाएगा. यहीं पे अपने को दिख रहा है कि NRV is less than the cost price. तो raw material को replacement cost पे value करना पड़ेगा. Determine how each item of inventory will be valued on 31st of March 2019. Also calculate the value of total inventory as on 31st of March 2019. Now if I am not wrong guys, ABC पैटर्न में आंसर लिखना है. स्टार्ट कीजिए. दैट एज पर AS2 इन्वेंट्री should be valued at cost और NRV whichever is less. रॉ मटेरियल को कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करेंगे, कॉस्ट पे मेजर करेंगे, बट अगर सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स is less than the cost price of finished goods, then replacement cost पे करेंगे. Work in progress is cost और NRV whichever is less. Finished goods at cost और NRV whichever is less. And then you can give the answer. मैं तुम्हें कैलकुलेशन का पार्ट दिखाऊंगा. So ये रहा हमारा कैलकुलेशन का पार्ट. एंड व्हाट एम आई डूइंग टुडे इज क्वेश्चन नंबर 8 Jan 21 पेपर. बहुत इजी क्वेश्चन था ना. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज Jan 21 का पेपर. फर्स्ट वन रॉ मटेरियल की बात करूँगा. सो रॉ मटेरियल का कॉस्ट इन्होंने दे दिया है 100 और रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन्होंने दे दिया है 80. दिस इज फैंटास्टिक. नेक्स्ट वन सेकेंड वर्क इन प्रोग्रेस का इन्होंने हमें दिया हुआ है. कॉस्ट है 245 टिल डेट. एंड गाइस NRV आ जाएगा इसका. नेट रियलाइजेबल वैल्यू will be estimated selling price of finished goods, that is 295 minus estimated cost of completion, that is 50 minus estimated cost to sale, that is 5% का brokerage बोला उन्होंने. So guys 295 का 5% brokerage will be 14.75. So 14.75. So इसका NRV आ जाएगा 295 minus 50 minus 14.75. I'm getting an answer of 230.25. Classic. Next one. Third they have given you is finished goods. So finished goods का इन्होंने आपको cost दिया है 295. Guys, estimated selling price is not 295. Estimated selling price is 280. Minus 50 is the cost of completion. माइनस 14.75 नहीं आएगा बिकॉज ये मैंने 295 पे कैलकुलेट किया था. तो 280 का 5% इज़ 14. सो नाउ इट इज़ 14. तो ये हो गई हमारी NRV ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. दैट इज़ 280 माइनस 50 माइनस 14 इज़ 216. And guys, cost of finished goods is 295. The selling price is, that is NRV is 280 minus expected cost of completion, cost to sale, that is 280 minus 14. I'm getting an answer of 266. Classic. Too good. So guys, now my closing stock का measurement चालू करते हैं. Closing stock में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ raw material. How much is raw material units? 900 units of raw material. Guys, selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods. So raw material should be valued at the replacement cost of 80. So we have 900 multiplied by 80 is equal to 900 multiplied by 80 is equal to 72,000.
नेक्स्ट वन इज वर्क इन प्रोग्रेस. सो वर्क इन प्रोग्रेस के कितने यूनिट्स थे? 400 यूनिट्स थे. एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस. सो एनआरवी इज लेस इज 216. So this is 400 into 216. I'm getting an answer of 86,400. And last one is finished goods. So finished goods should be measured at cost on NRV whichever is less. So we have 800 units. 800 units into 266 of NRV. So we have 800 into 266 and I'm getting an answer of 2,12,800 of finished goods plus 86,400 plus 72,000 of raw material. 3,71,200 is the value of inventory as per Jan 21 paper. So let's measure that. 3,71,200, 3,71,200. Tell me, Chakas, tell me that you're getting the answers right on the money. क्या कहते हो guys? बढ़िया. Too good. चलिए, ये रिकॉर्डिंग करते वक्त ना इससे गर्मी लगता है ना गाइस. चलो, I'll proceed ahead. So this is my question number 8. I'll go to question number 9. We ready? Question number 9, May 21 RTP. Question number 9 will be May 21 का RTP सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. चलो, first one. The inventory of Rich as on 31st of March 2020 comprises of product A 200 units and product B 800 units. Guys, दो प्रोडक्ट हैं हमारे पास, प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B. प्रोडक्ट A का 200 यूनिट्स है और प्रोडक्ट B का 800 यूनिट्स है. Details of the cost of these products are as follows. Product A, material cost, wages cost, overhead cost for each unit is 40, 30, 20 respectively. Each unit can be sold at 110. Selling expenses amount to 10% of the selling cost. Next one, product B. Material cost and wages of each unit are 45 and 35 respectively and normal selling price is 50. However, due to the defect in manufacturing process, 800 units of product B were expected to be sold at 70 per unit. You are requested to value the closing stock as per AS2 after considering the above information. Now this is very simple, very simple. The closing stock should be valued at cost or NRV whichever is less. So guys, बहुत ही simple है. प्रोडक्ट ए की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट ए का कॉस्ट कितना आ रहा है? प्रोडक्ट ए का कॉस्ट आ रहा है गाइस, मटेरियल कॉस्ट इज 40, वी हैव वेजेस एट 30 and overheads are 20. So I'm getting cost of 90 and I'm getting NRV of product A at 110 minus 10%. So 110 minus 10%, 110 का 10% लेस कर दूंगा तो I'm getting an answer of 93 at cost or NRV whichever is less. So it will be at cost of 90. Next one, प्रोडक्ट B की बात करते हैं हम लोग. So guys, प्रोडक्ट B का कॉस्ट कितना है? प्रोडक्ट B का कॉस्ट है 45 and 35 respectively. So 45 plus 35 respectively, that is 80. And guys, NRV कितना है? So NRV normal selling rate is 150. However, due to some defect, there was a defect. So manufacturing process of this 800 units are expected to be sold at only 70. So NRV is going to be 70. Now whichever is less, answer is going to be 70. यहाँ पे 150 नहीं लेना था. अब क्लोजिंग स्टॉक की बातें कर लेते हैं. तो क्लोजिंग स्टॉक में हमारा प्रोडक्ट ए विल बी how many units of product A? 200 units of product A into 90. So this is 200 into 90. I'm getting an answer of 18,000. And next one, I'm taking on product B. So product B is 800 units and it can be sold at only 70. So 800 into 70 is, I'm getting an answer of 56,000. So 18,000 plus 56,000, I'm getting an answer of 74,000. ठीक है, चलो ग्रेट है, काफ़ी है. कोई डाउट्स है आपको? टू गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग. दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 9. आई एम गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. गाइस, लेट्स कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर चेक कर लेते हैं. 74,000, 18,000 प्लस 56,000 is 74,000. इट हैज़ टू टैली. क्या कहते हो? बढ़िया. चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये सेम सिमिलर क्वेश्चन है जो लास्ट में कल सॉल्व करके हुए गया था मैं.
So एग्जैक्टली उस लाइन पे चलता है, तो दिमाग लगाना है थोड़ा. फर्स्ट वन, J Limited purchases 20,000 kilograms of raw material at 20 per kilogram during the year 2010 and 2020 and 21. So 20,000 kilograms तो हम लोग already purchase करके बैठे at the rate of 20. They have furnished you with the following further information for the year ended 31st March 2021. Particulars: opening inventory, finished goods 2000 at 1 lakh, raw material 2200 at 44, direct labor 3 lakh 6000, fixed overheads should be absorbed at actual cost per unit or budgeted cost per unit, whichever is less, 3 lakh. Then we have sales at 20,000 units at 11 lakh 20,000, closing inventory में finished goods and closing inventory में raw material. The plant had a capacity to produce 30,000 units of finished product per annum. However, the actual production of the finished goods during the year 2020-21 was 20,400 units only. ये 20,400 units देने भी नहीं चाहिए थे, हम खुद calculate कर लेंगे. Due to fall in value of market demand, the price of finished goods in which raw material has been utilized is expected to be sold at 40 per unit. The replacement cost of raw material is 19 per kilogram. You are required to value the inventory as on 31st of March 2021 as per AS2. This is lovely question. I love this kind of questions. Question number 10, and this question is July 21 का paper. So this is July 21 का paper. झकास है? Too good. चलो, सो जुलाई 21 का पेपर, फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल का कॉस्ट इन्होंने ऑलरेडी आपको दे दिया है. तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 20 पर के जी, ₹20 पर के जी. उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी इन्होंने दे दिया है. रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 19 पर के जी, इज ₹19 पर के जी. नेक्स्ट वन, सेकेंड थिंग इज फिनिश गुड्स. अब फिनिश गुड्स का क्या निकालना पड़ेगा हमें? फिनिश गुड्स का हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए, दैट इज द कॉस्ट. कॉस्ट कहाँ से चालू करोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम. रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे यूनिट्स की, कि कितने यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम हुए हैं. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, that is equal to 2,200 units of opening stock of raw material plus purchase में 20,000 units स्टॉक पे दिए थे, ये रहे, and closing stock of raw material is 1,800. So raw material consumed is 20,400 units, जो उन्होंने इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया कि 20,400 units of finished product is produced. So guys, amount wise अब raw material कितना आएगा? अमाउंट वाइज आपका रॉ मटेरियल आएगा 20,400 इंटू 20 पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल. 20,400 इंटू 20 पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 4,08,000. नेक्स्ट वन, वर्क इन प्रोग्रेस की बात, रॉ मटेरियल के बाद लेबर की बात करेंगे. सो लेबर इज इक्वल टू 3,06,000 एंड गाइज ओवरहेड्स should be actual cost per unit or budgeted cost per unit, whichever is less. So guys, overhead का working note यहाँ पे कर रहा हूँ मैं. So this is overheads. Budgeted, how much is budgeted cost per unit? तो टोटल 3 लाख का खर्चा हुआ है, 30,000 यूनिट्स बजट किए गए थे. 3 लाख डिवाइडेड बाई 30,000 यूनिट्स बजट किए थे इज इक्वल टू ₹10. And how much is actual cost per unit is, guys, 3 lakh divided by number of units produced is only 20,400, not 30,000. So this is 3 lakh divided by 20,400. It's 14.71. Now whichever is less, तो कौन से वैल्यू पे एब्जॉर्ब करेंगे? 10 पे एब्जॉर्ब करेंगे. इसे हम एब्जॉर्ब 14.71 पे नहीं करेंगे, सिर्फ 10 पे करेंगे. सो इट विल बी 20,400 इंटू 10 इज इक्वल टू 2,04,000. सर टोटल हमारा खर्चा 3 लाख हुआ है. बेटा अगर आपको याद हो तो 3 लाख में से 2,04,000 इन्वेंट्री में चला गया, तो बाकी का 96,000 ना ये डाल देना P&L अकाउंट में. चलिए टोटल 4,08,000 प्लस 3,06,000 प्लस 2,04,000, अपना टोटल आ जाएगा 9,18,000. So this is 9,18,000 is my cost.
दैट इज कॉस्ट पर यूनिट अगर अभी हमें निकालना है तो 9,18,000 डिवाइडेड बाई 20,400 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड divided by 20,400. I'm getting an answer of rupee 45 per unit is my cost और इसका NRV कितना दिया है वो चेक करते हैं. So B is NRV. How much is NRV? NRV is 40 per unit. Due to the fall in market demand, the price of finished goods in which raw material has been utilized is expected to be sold at 40 per unit. At 40 per unit, whichever is less. तो इसको किस पे measure करेंगे? 40 पर करेंगे. और क्योंकि फिनिश गुड्स का कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो उसके NRV से, तो रॉ मटेरियल को भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे ही मेजर करना पड़ेगा. दैट इज 19 पर यूनिट. सो रॉ मटेरियल एट 19 per unit and finished goods at 40 per unit. And now we'll say closing stock. So how much will be my closing stock? My closing stock will be very simple. Raw material का closing stock 1800 into 19 per unit. This is my raw material का closing stock 1800 into 19 per unit. 1800 into 19 per unit is 34,200. और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक इज 2,400 into 40 per unit. So guys, this is 2,400 into 40 per unit. I am getting 96,000. 34,200 plus 96,000. I am getting an answer of 1,30,200. टेल मी चकास. और आंसर चेक भी कर लेते, टैली भी करते कि डज इट टैली और नॉट. मैंने सोल्यूशन बना के दिया है आपको. 1,30,200, वी से 34,200 एंड 96,000. दैट कम्स टू 1,30,200. चकास है? कोई डाउट? टू गुड. विल नॉट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम. कीप ऑन मूविंग. डोंट गेट टायर्ड. You are practicing. Guys, this is my question number 11. And my question number 11 is November 21 ka RTP. Can I start with this, guys? Chaliye. On 31st March 2020, the business firm finds that the cost of partly finished goods on that date was 430. Partly finished product, work in progress. Work in progress का cost दे दिया है 430. The units can be finished in 2020-21 by additional expenditure of 310. The finished units can be sold at 750 subject to 2% of brokerage. So guys, NRV की बात कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस की बात चल रही है. वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट इन्होंने बोल दिया है 430 है. वर्क इन प्रोग्रेस का NRV निकालना है. एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 750 माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इज 310 माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल इज 2%. तो 750 का 2% इज 15. We get the answer, that is 750 minus 310 minus 15. I'm getting an answer of 425. Cost or NRV, whichever is less. NRV is less, so it should be valued at 425. That is valued at 425. Jagas. 430, 425, it should be valued at 425. Any doubts on that? Too good. Done. 2021 done. Let's go to question number 12 and we are reaching to 2022. I'm talking about May 22 RTP. Are you ready with this also, guys? Chaliye. In determining the cost of inventory, it is appropriate to exclude certain items and recognize them as expense in the period in which they are incurred. Provide the examples. Guys, what items are excluded in the cost of inventory? Items that are excluded from the cost of inventory is 1. Storage cost. 2. Abnormal wastages. So abnormal wastages. 3 is admin cost. And guys, 4th is selling cost. Storage cost, abnormal wastages, admin expenses, selling expenses. Jakas, too good. Question number 13. Can I continue? I love you guys. Chaliye. So I'll continue with question number 13, guys. Now this is May 22 ka RTP.
This is a nice question. So guys, this is question number 13 and May 22 का RTP. चलो, can I start with this guys? First से चालू करते हैं. On the basis of following information given to you, find the value of closing inventory by periodic inventory method as per AS2 to be considered while preparing the balance sheet as on 31st of March 2021 on weighted average basis. Guys, question में clearly कहा गया है कि आपको weighted average basis use करना है, भूलना नहीं. Now details of purchase, guys, purchase दिए गया है number of units cost price, 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 date of issue दी गई है, number of units, number of units, number of units, net realizable value दिया हुआ है inventory का, and you are required to compute the value of inventory weighted average basis से कहा गया. So guys, सबसे पहले is units की बात करता है. तो units की बात में guys हमारे पास डेट ऑफ परचेज मतलब इनपुट्स या इनफ्लोज कितने थे यूनिट्स की अगर हम बात करेंगे तो 20 यूनिट्स प्लस 15 यूनिट्स प्लस 30 यूनिट्स प्लस 15 यूनिट्स. आई एम गेटिंग 80 यूनिट्स एज इनफ्लोज. एंड गाइज आउटफ्लोज की बात करेंगे तो आउट मतलब इश्यूज की बात करेंगे तो इश्यूज में था 10, 30, 40, 60 यूनिट्स हमारे आउटफ्लो हो गए. तो 20 यूनिट्स का हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचता है. अब क्लोजिंग स्टॉक का गाइस सबसे पहले हम लोग लेंगे ए द कॉस्ट प्राइस. वेटेड एवरेज बनाने को कहा है उन्होंने, सो भूलना नहीं. गाइस वेटेड एवरेज कैसे आएगा तो पहले कॉस्ट निकालना है और कॉस्ट निकालना है वेटेड एवरेज से. सो कॉस्ट एज पर वेटेड एवरेज. सो गाइस हमारे 20 यूनिट्स थे एट द रेट 108. फिर हमारे 15 यूनिट्स थे एट द रेट 107. फिर हमारे 30 यूनिट्स थे एट द रेट 109. फिर हमारे 15 यूनिट्स थे एट द रेट 107. सो 1 2 3 4 गाइस 20 यूनिट्स एट 108. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 2160. नेक्स्ट वन 15 यूनिट्स एट 107. आई एम गेटिंग 1605. Next one 30 units at 109. I'm getting an answer of 3270. And last one is 15 units into 107. I'm getting 1650. So total 1605 plus 3270 plus 1605 again plus 2160. I'm getting a total of 8640. Guys, that is 8640 divided by 80 units. Weighted average निकालना है तो मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गया ₹108 पर यूनिट. गॉट दिस. एंड गाइस सेकेंड वन बी उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालना है. तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू में उन्होंने दिया है हमें 107.75 पर यूनिट. सो इट शुड बी एट द कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस. सो NRV इज लेस, दैट इज 107.75 इज लेस. गाइस देयरफॉर my closing stock as per periodic inventory system should be 20 into 107.75 calculation. 20 into 107.75. I'm getting an answer of ₹2155. Tell me Jakas. 2155, 2155, 2155. Classic. Too good. Has to tally ना. क्या कहते हो? बढ़िया. चलिए, this is question number 13 done. I'm going to question number 14. So this is going to be my question number 14. And this is May 22 का RTP. May 22 का RTP. क्या कहते हो? चलो. Rohan Limited, a wholesaler in agricultural product, has valued the inventory at net realizable value on the ground that AS2 does not apply to inventory of agricultural products. What do you think? Does AS2 apply to the agricultural products? AS2 does not apply to the producer of agricultural product but applies to the trader in agricultural product. So it does not apply to the producer but it does apply to the trader. Hence AS2 will apply to Rohan Limited and it will have to value the inventory at lower of cost or net realizable value. Guys, AS2 के application की बात थी. AS2 is applicable to trader but yes it is not applicable to manufacturer of agricultural products. मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे मतलब फार्मर को देखेंगे तो हम लोग AS2 अप्लाई नहीं करेंगे. सो AS2 नॉट अप्लाइड. बट ट्रेडर को अप्लाई करना है.
ट्रेडर पे इट शुड बी एट कॉस्ट और NRV whichever is lower. Tell me, Jackass. Too good. चलिए guys, next thing is question number 15. So let's continue with question number 15 and that is May 22 का paper. So question number 15, this is May 22 का paper. Recent, the most recent paper. Solution इसमें नहीं मिलेगा but मैं solution बना के दूंगा आपको. SM Enterprise is a leading distributor of petrol. The detailed inventory of the petrol is in hand is taken when the books are closed at the end of each month. For the end of the month 2021, June 2021, following information is available. Sales for the month of June are 30,40,000. General overheads are 4 lakh. Inventory at the beginning is 10,000 liters at 92 per liter. Purchases June 1 at 20,000 liters at 90 per liter. June 30 at 10,000 liters at 95 per liter. Closing inventory is 30,000. You are required to compute using FIFO method. Guys, FIFO method से बात की है तो वर्किंग नोट नंबर 1 मैं इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ. बहुत सिंपल है. हमारे पास ओपनिंग में कितने यूनिट्स थे? 10,000 लीटर एट द रेट 92. 1 जून को मैंने कितने यूनिट्स परचेज किए? 20,000 लीटर एट द रेट 90. एंड गाइस 30th जून को मैंने कितने यूनिट्स परचेज किए? 10,000 लीटर्स एट 95. सो 10,000 लीटर्स एट द रेट 95. ये हमारी इन्वेंट्री की बात हुई. अब हमारे क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स पड़े हुए हैं 13,000 फीफो. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट वाला 10,000 एट द रेट 95 हमारे पास पड़ा हुआ है और 3,000 ये 20,000 के यूनिट्स में से पड़ा हुआ है एट द रेट ऑफ 90. सो गाइज इट इज 10,000 इंटू 95, दैट इज 9,50,000. एंड गाइज 3,000 इंटू 90, that is 2,70,000. 9,50,000 प्लस 2,70,000 गाइज आपका कॉस्ट आ जाना चाहिए 12,20,000. जकास वाली काम हो गई. आंसर नंबर 2. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए बोला है. कितना सिंपल होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. सो ओपनिंग कितना था? 10,000 एट 92, दैट इज 9,20,000 प्लस परचेज कितना था? 20,000 into 90, that is 18 lakh. And guys plus 9,50,000, that is 10,000 into 95 minus 12,20,000, that is my closing stock. So guys now my calculation is 920 plus 18 lakhs plus 9,50,000 minus 12,20,000. I am getting an answer of 24,50,000 is my cost of goods sold. थर्ड आंसर गाइज इन्होंने प्रॉफिट पूछा है. बहुत सिंपल सी बात है. सेल्स माइनस COGS माइनस जनरल ओवरहेड्स कर दो तो अपने को प्रॉफिट मिल जाएंगे. हाउ मच इज सेल्स दैट दे हैव गिवन टू मी? 30,40,000. हाउ मच इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट दे हैव गिवन टू मी? इज 24,50,000. एंड हाउ मच इज जनरल ओवरहेड्स? जनरल ओवरहेड्स आर 4 लाख. बढ़िया. सो 10,000 इंटू 92 इज 920 plus 18 plus 950 minus closing stock of 1220 is 2450 का आ गया था. 30,40,000 minus 24,50,000 minus 4 lakh, मेरा प्रॉफिट आ रहा है 1,90,000. That's my profit for the period. Classic. Too good guys. This is my question number 15 and with this I complete my inventory. Got that? सो May 22 तक हम लोग एब्सोल्युटली अपडेटेड हो चुके हैं. अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे तो मैं इसे ऐड करते जाऊंगा. टू गुड. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ. लव यू. टेक केयर. बाय बाय.